So, good evening, everyone. Today we have a slightly different topic than the usual financial spaces topic that we could discuss in the various sessions that we have. So, the topic today is going to be around health and nutrition. I don't know if you guys would want to talk about that on a Saturday evening, but I'm glad so many of you have joined today. And today we have with us Malvika Mahajan. Malvika is a trained clinical nutritionist, and she has been actively practicing since 6 years now. She specializes in weight loss and therapeutic diets, centered around diabetes, hypertension, functional medicine. So, we are very, very happy to welcome each one of you who have taken out your time today to discuss this very, uh, you know, pertinent issue. जान है तो जहान है. So, जान को कैसे बचा के रखना है is our topic of discussion today with Malvika. Welcome, Malvika, Hi, Shaina. and thank you so much for joining. Hi, hi. Hi, Shaina. So, Malvika, do you want to give a? I have introduced you, but do you want to give a short introduction? Yeah, sure. So basically, I've started Health Decoded so that the diet fits into your life like a puzzle, and you don't have to change in order to incorporate our diet. So a customized diet is what I basically do. Okay, wonderful, wonderful, Malvika. Thank you so much. So you are here on a FinTwit space, which means they're people who sit in front of their systems at 9 o'clock in the morning, and mostly they do not get up before 3:30. You know, and post that time, their time revolves around a lot of discussion, webinars, sessions like these. So a very sedentary Yeah, and I a understand. stressful, yeah, sedentary and a stressful lifestyle, so to say. So, the first thing that I would want to ask you is what are the lifestyle diseases that a lifestyle like this could attract? So, see, the problem with traders is that they have a high stress lifestyle and a sedentary lifestyle, which leads to obesity, which itself can trigger about 53 diseases and cause functional changes in your heart, which is why it shortens lifespan. And if you read the new statistics, 2.8 million people die annually. So, what happens is when we are stressed, our body produces cortisol, which makes us accumulate fat around our belly. This visceral fat directly puts pressure on your heart. So, the diseases that you commonly face are CVD, hypertension, diabetes, aches and pains, and insomnia. Okay, so I think a lot of us, I mean, a lot of this community definitely is going through one or the other of these diseases unless one is really conscious about it. Can this also affect, Malvika, can this also affect someone's efficiency or someone's, mental cognitive, focus or Of, something like that? of course, in fact, India has been losing out a lot of money due to this. So, $200 billion in national income are lost due to deaths caused by CVD. And we don't even realize how important So nutrition what is is. CVD? Could you These elaborate are CVD? cardiovascular diseases. Okay. So another thing is that most of our, so many of us have diabetes, and we're so busy handling our work, doing this, doing that, that we don't even look into it. But diabetes, when it progresses to the brain, is called type 3 diabetes, and obviously that leads to Alzheimer's. So this, once you get Alzheimer's, there's no way you can work. And another very important thing is that a lot of you must be dehydrated. So, our brain is 80% water. It does not know how to function without water. So, even a 2% dehydration starts affecting your mental abilities like reasoning, memory, and even logical processes. Okay, so that is that is quite scary the way you In, put it. in fact, Definitely.
there's a direct and an indirect cost associated with it. So the direct is obviously the money that you spend on treatment, and when you talk about the indirect cost, it comes in the form of absenteeism and presenteeism. So when you're not able to work due to poor health, and this actually accounts for most of the losses, which is why you'll see more and more corporates also trying to introduce nutritional plans for their employees. That's right, Malvika. तो मालविका, आपने प्रॉब्लम को तो बता दिया है और हम सबको डरा भी दिया है. But you know what? Now you will have to give us, since you are an expert, and everybody here is, really looking forward to solution, because they still don't want to lose out on the screen time. सबको 9 से 3 स्क्रीन के आगे बैठना है. कुछ लोग हैं जो एक्चुअली कंपनीज में काम करते हैं, वो तो 9 से रात के 9 बजे तक भी बैठते हैं, एंड दे whatever they eat is mostly junk. They have a lot of caffeine and a lot of fast food or quick foods, without giving a proper attention to any of these lifestyle aspects. So help us. आप बताइए कि ये कैसे इसको बेटर किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है. एक्चुअली पता है, सोल्यूशन बहुत सिंपल है. अगर आप अपना 10% बॉडी वेट भी लूज कर लेते हो, ये जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं सारे रिवर्स होने लगते हैं. इट्स दैट सोल्यूशन, इजी द सोल्यूशन. एंड ये जो आप जंक खाते हो, चीनी खाते हो, ये आप इसलिए नहीं खाते क्योंकि आप खाना चाहते हो. ये जो आपका स्ट्रेस और कोर्टिसोल है ना, इट्स मेकिंग यू क्रेव दैट, बिकॉज ये जो चीनी होती है ना, हमारा डोपामिन इंक्रीज करती है, इसीलिए खाते हो. तो once you replace that sugar with something else that also increases your dopamine, आप वो खाओगे ही नहीं. पर आप बताइए कि मतलब आप एक इमेजिन कीजिए, एक वन पर्सन जो ऑफिस जाके 9 बजे बैठ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, और उसको कॉन्स्टेंटली दैट पर्सन हैज टू बी वेरी अवेयर, अटेंटिव, और मतलब उसको चाय भी पीनी है, उसको अपनी कॉफी भी पीनी है, उसको अटेंटिव रहने के लिए कैफीन भी चाहिए, वो जाके शायद बाहर सिगरेट भी पीते होंगे, और ऐसी ऐसे तो उसके लिए जस्ट टू से कि आपको चीनी नहीं खानी चाहिए इज यू गिव अस कि कोई इसका मतलब कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करे, क्या ऐसी चीज हो सकती है जो कि आए आपको क्रेविंग हो तो आप ये खा लीजिए, ये स्नैक होना चाहिए, दिस कैन बी ऑप्शन फॉर अ मील. तो उसको थोड़ा इलेबोरेट करके प्लीज हेल्प कीजिए. See, the thing is कि हमें लगता है कि अगर हम चीनी खाएंगे तो कंसंट्रेट कर पाएंगे, हमें लगता है कि अगर हम जंक खाएंगे तो हम कंसंट्रेट कर पाएंगे. पर अगर आप स्टडीज पढ़ो, व्हेन यू गेट अ लिटिल मोर टेक्निकल, ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली रिड्यूस योर ब्रेन फंक्शन. जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है ना, वो लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों से डिक्लाइन होने लगती है. आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीज़ें खानी है will increase your cognitive functioning. So you actually, जैसे एक माइंड डाइट होती है which is a mixture of a Mediterranean and DASH diet, ठीक है, उस पे जा सकते हो. एग्स खा सकते हो, एग्स एक्चुअली हेल्प इन ब्रेन फंक्शनिंग. ओमेगा 3 खा सकते हो, हमारा ब्रेन है वो फैट का बना है, और अगर आपको नए ब्रेन सेल्स बनाने हैं सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर एंड ऑल, आप ये ऐसी चीज़ें खाओ. एंड इनफैक्ट जो जैसे स्ट्रॉबेरीज होती है, वो आपको आपका जो केमिकल्स है विच हेल्प इन कॉन्सेंट्रेशन वो तो बढ़ाती है, बट दे ऑल्सो हेल्प यू the nutrients reach the brain. Berries help nutrients reach the brain. So these are the things that you should actually be having if you want to increase your profitability. जो आप ऑलरेडी खा रहे हो उससे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, बस थोड़े टाइम के लिए आपको डोपामीन स्पाइक मिल रहा है जिससे आपको लग रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. ऐसी मालविका चीज गणेश है, मालविका गणेश है, ये डोपामीन स्पाइक क्या होता है? और आप ये बोल रहे हो कि मैं कोई चीजें खा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं पीक परफॉर्मेंस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसी कौन सी चीजें हैं? और आपने जो अभी सजेस्ट करा, क्या आप मेरे को एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके में बता सकते हो कि मेरी डाइट एज अ ट्रेडर, मेरी डाइट कैसी होनी चाहिए? क्योंकि मैं एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैं भी करता हूँ, और इट इज वेरी ट्रू दैट द स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी हाई स्टेक. मोस्ट ऑफ अस आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अर्ली एजिंग, अगर इसको बोला जाए तो कैन यू गिव अ गाइड वेरी स्लोली, पॉइंट बाय पॉइंट, इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर? ऑफ कोर्स. तो देखो, पहली चीज तो मैं बोलूंगी कि आप माइंड डाइट पे जाओ. इट्स बेसिकली उसमें आप what happens is it can reduce your brain aging by about 7.5 years.
right? तो आपको you Malvika, want what a is a mind diet? mind diet is a mixture of a Mediterranean diet and a dash diet. उसमें what we do is we emphasize on fruits, we emphasize on vegetables, we emphasize on legumes because इससे again sugar spike नहीं होगा. We emphasize on lean protein like chicken. We give eggs. तो ऐसी चीजें खाओगे तो it will help you reduce your brain aging. So this is what we actually give. Again, what you're also supposed to have is एंटीऑक्सीडेंट. जैसे उन्होंने क्लियरली पॉइंट आउट किया कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हम स्मोक करना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो ये जो सिगरेट स्मोकिंग है ना, ये आपका डायबिटीज का चांस भी 30 से 40% बढ़ा देती है बिकॉज ये केमिकल्स ऐसे रिलीज करती है जिससे इन्फ्लेमेशन होगा. अब ये इन्फ्लेमेशन तो आपने कर दिया, अब इसको ठीक भी करना है ना, तो आप अलग अलग तरह के डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ. बेस्ट चीज होएगी ब्लूबेरीज, इट्स द हाईएस्ट इन एंटीऑक्सीडेंट. तो जो डैमेज कर रहा है उसको पहले रिवर्स करो. राइट. तो इसमें मालविका एक चीज आप प्लीज बताइए कि आप डाइट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऑल दीज पीपल, यू नो, मोस्ट ऑफ दीज पीपल, आई विल नॉट जनरलाइज इट, बट जहां तक मेरा ख्याल है, मोस्ट ऑफ दीज पीपल, they do not exercise. Honestly, I don't think they are exercising because there is no time to exercise, and you know there is no window कि कब उठ के you can go and exercise. So उसका कितना role है, and what are they losing out by not exercising? See, as I said, it's you need to lose 10% of your weight. A healthy way would be कि आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों करो. बट हैविंग सेड दैट 70% अगर वेट लॉस करना है इट्स योर डाइट, तो आप बैठे बैठे भी वेट लॉस कर सकते हो. बट एक्सरसाइज हम ऑब्वियसली इसलिए रेकमेंड करते हैं बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी होती है, आपकी डायबिटीज भी रिवर्स हो जाती है. इट बेसिकली जस्ट स्पीड्स अप द प्रोसेस. वेट लॉस तो बैठे बैठे भी हो जाता है. if you want to speed up the process then you introduce working out. and अगर आपका बहुत ज़्यादा body weight है तो आप वैसे भी इतना workout नहीं कर पाओगे because imagine जैसे कि अगर कोई 100 किलोस का है वो क्या मुझे आज स्किपिंग करनी है, उसके नीज पे भी तो देखो कितना प्रेशर पड़ रहा है. so even your workout regime has to be very specific according to your weight. So, Malvika, तो coming back, uh, ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं जो एज अ ट्रेडर मेरे को वेरी स्पेशली खाने चाहिए? ब्लूबेरी मेरे को एक समझ में आ गया, एग्स ऑलरेडी मेरी डाइट में हैं, बाकी चीजें भी ऑलरेडी मेरी डाइट में हैं. ऐसे कोई सुपर फूड कौन से हैं जो एग्जैक्टली मेरी टाइप की प्रोफाइल के लिए, विच इज अ हाई स्ट्रेस हाई स्पीड एनवायरनमेंट के अंदर में ऑपरेट करने के लिए, ऐसे कोई सुपर फूड्स हैं विच यू रिकमेंड? हेलो, अगर आप ऐसे पूछे तो फिर आप सबसे पहले नट्स एंड सीड्स खाएं. ठीक है, आप विटामिन ब्रोकली खाओ, उसमें विटामिन के होता है, उससे आपके ब्रेन सेल्स की मेमोरी बेटर हो जाती है और आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेटर होती है. ठीक है, पीस खाओ, उसमें फोलेट होता है जिससे आपके ब्रेन सेल्स डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं. और ऑब्वियसली ऐसा अगर आपको स्पेशली जैसे मैंने बोला था पेट के अराउंड फैट है ना, तो आप फाइबर खाना शुरू करो. जैसे कि इसबगोल खा लो. तो इसबगोल क्या करेगा, वो आपके जो स्टमक में फैट है उसके साथ और कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ बाइंड करके उसको बाहर निकाल देगा. तो ये खाना शुरू करो. हर रोज एक चीज करो कि आपने हर रोज एक अलग कलर का फ्रूट खाना है. तो आपने हर डिफरेंट कलर लिया तो हर कलर में अपने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. सो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ दैट. Basically different colors of fruits and vegetables to detoxify the body. So, Malvika, you had initially also spoken about hydration and dehydration affecting the lifestyle, and and obviously efficiency, etc. So, what is how can we actually, what, just hydration is just water, or can it includes other things also? Yes, hydration is not just water, it's food and water, but
सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट वाटर ही होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो मेनली वी ऑल नो इट्स मेड अप ऑफ वाटर। तो जो हमारा ब्लड है, पानी, उसमें पानी इज वाटर इज द मेन मीडियम। तो अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं होगा तो ब्रेन में भी ब्लड ठीक से कैसे पहुंचेगा, राइट? अगर ब्लड ठीक से सर्कुलेट ही नहीं हो रहा, ब्रेन में भी कैसे पहुंचेगा? ब्रेन में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे? न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचे तो ब्रेन चलेगा कैसे? इसलिए तो ही कह रही थी कि अगर तो कितना 2%। हाइड्रेशन चाहिए, मतलब कितना वाटर, कितने ग्लासेस, कितने लिटर्स इज समथिंग दैट वन वुड रियली नीड? See that again, उसमें ना, like, what, it's very different for every person, but just make sure that you have enough water कि जो आपका यूरिन है it's almost white, not white but almost white. So अगर आप उस level of hydration पे है, that is ideal. So that's how you calculate your own body, by seeing the color of the urine. Okay, so this is about, mostly what you're sharing is mostly about, how to avoid diseases, how to, maintain a lifestyle where you can actually be healthier. But now, what is it that can make me more efficient? That is another aspect that I can, function even better than 100%. So what is a, nutritional component for that? See, गुड a गुड क्वेश्चन nutrition. है। तो मालविका, मालविका, मेरे को, सी, मैं स्टॉक मार्केट में मैं पैसे कमाने के लिए हूँ। सी, हेल्थ वेल्थ ठीक है, बट मेन मोटिव है प्रॉफिट होना चाहिए। तो अभी आपने बताया, हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि हम लोग, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दीज हेल्थ इश्यूज हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा हो, उसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट ना कर रहे हो। अब मेरे को एक अपना और ज्यादा बेटर ट्रेडर बनने के लिए आप मेरे को क्या क्या रेकमेंड कर सकते हो, जिससे मेरी परफॉर्मेंस और मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाए? ये आज सब लोग इस बात को सुनने के लिए आए हैं। प्रॉफिट्स तभी इंक्रीज होंगे जब हेल्थ ठीक रहेगी, पहली बात। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो 3-4 मेन प्रॉब्लम्स है ना स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स जो फेस करते हैं, उनके डाइट सॉल्यूशंस बताती हूँ। जैसे कि आप में बहुत लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। हमें लगता है कि जो हम चीज़ खा रहे हैं उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। 80% कोलेस्ट्रॉल जो हमारा है वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ट्राइग्लिसराइड्स हम सब अपनी प्रोफाइल देखते हैं, उसमें एक चीज़ लिखी आती है, लिपिड प्रोफाइल में होती है, तो हम कहते हैं चलो फैट से हो रही है, वो कार्ब से होती है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो मैं कुछ डाइटरी टिप्स देना चाहूँगी। आप ऐसा करना, फर्स्ट थिंग, आप अपनी डाइट में ओट्स डालो। ठीक है, ओट्स में जो फाइबर है वो आपके गट से ही कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा, वो आपकी बॉडी में पहुंचेगा नहीं। हर रोज 2 पॉड्स गार्लिक के खाओ। ये एंशियंट टाइम से एज ए मेडिसिन यूज हो रहा है, इसको हिपोक्रेट्स भी यूज करता था। अगर आप 2 पॉड्स गार्लिक के 1 महीने के लिए खाओ, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 100 mg कम हो जाता है 30 डेज के अंदर ही। ये एक दवाई है, इसको खाना शुरू करो। और थर्डली, नट्स और सीड्स खाओ। इसमें जो प्लांट स्टेरॉल है ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा। सेकेंड, हम आते हैं डायबिटीज से पे। जैसे मैंने आपको बताया था, डायबिटीज जब बढ़ जाती है तो वो आपके ब्रेन के अंदर पहुंच के अल्जाइमर्स कर देती है, जिसको आजकल हम टाइप 3 डायबिटीज भी बोल रहे हैं। डायबिटीज से प्रॉफिट ऑब्वियसली इसलिए भी कम होगा क्योंकि डायबिटिक केयर बहुत एक्सपेंसिव होता है। सेकेंडली, एक बार आपको डायबिटीज हो जाए, आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका हर एक ऑर्गन खराब कर सकती है वो। तो आपका पूरा दिन ध्यान तो उसी में होगा ना, कि अब मैं क्या खाना खाऊं, अब मेरी इंसुलिन इंजेक्शन का टाइम हो गया है, अब मेरी शुगर गिर गई है, मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। हाउ विल यू फोकस ऑन योर वर्क? There is no way you can focus on your work once you get chronic diabetes. आपका फोकस ही आपकी हेल्थ पे और जीने पे रह जाएगा। तो उस स्टेज को आने भी क्यों दे रहे हो? The most common symptoms of diabetes are again of course पॉलीडिप्सिया, कि हमें बहुत भूख लगती है, हमें बहुत प्यास लगती है और हमें बहुत यूरिन आता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, सिंपल चेंजेस करना शुरू करो। पहले, जो कार्ब्स हैं जिसमें फाइबर नहीं है उनको खाना बंद करो। तो अपने जो चावल है, मैदा है, चीनी है, उसको रिप्लेस करो उन कार्ब्स के साथ जिनमें फाइबर है, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं। जैसे कि जो किनुआ है,
ओट्स है, लेग्यूम्स है, राजमा है, आप ये सब खाओ। सेकेंडली, अगर आपको डायबिटीज है, चीनी बंद करो। चीनी से तो होती है, इसकी जगह नेचुरल शुगर लो, स्टीविया लो, या फिर आजकल एक और आई है नेचुरल विदाउट साइड इफेक्ट्स, उसको हम इरिथ्रिटॉल बोलते हैं, वो ऑर्डर कर लो। और तीसरी चीज, वेट लॉस करो। अगर आपका 1 ग्राम फैट भी आपके पैनक्रियास से कम हो जाता है तो आपको की डायबिटीज रिवर्स होने लग जाती है। और जैसा कि घनिष्ठ ने पहले भी बोला था कि आपको बहुत दर्द रहती है चीज़ों में, है ना? तो ट्रेडर्स में क्योंकि एक जगह बैठे रहते हो, बॉडी अकड़ जाती है, एक्स एंड पेन्स बढ़ जाते हैं। ये भी इसलिए होता है बिकॉज जो आपकी बॉडी में केमिकल्स फैट सेल्स बना रहे हैं, उनसे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है। तो अगर आपका बीएमआई 30 से 34 के बीच में है, तो आपको 68% ज़्यादा पेन होएगी। और यही बीएमआई अगर 40 के ऊपर है, तो आपको 254 टाइम्स ज़्यादा पेन शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब आप कहोगे कि इन्फ्लेमेशन है, अगर इन्फ्लेमेशन है तो आप ऐसी चीज़ें खाओगी जो उस इन्फ्लेमेशन को न्यूट्रलाइज करती है। जैसे मैंने बोला था, इसके लिए सबसे अच्छा है अलग अलग रंगों की फल और सब्जियां खाना। हैव एवरी कलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। one day you have an apple, one day you go and have a blueberry, one day you have a guava, so that every color removes the toxins and your aches and pains reduce. So these are the most common problems थैंक यू and मालविका, ये this is आपने the बहुत solution. सही तरीके से डिटेल में बताया एंड दैट इज समथिंग दैट वी वांटेड टू नो। एक मालविका, हमारा एक क्वेश्चन है, अब जैसे मैं हूँ, मैं आई although I'm not a trader, but for a person like me who is a vegetarian, I don't even eat eggs, and so eggs, chicken is out of my diet. So अब उस हिसाब से अगर देखें, and I'm sure a lot of our listeners today, in fact somebody even DM'd me right now, asking that we don't eat eggs and chicken. So what is the vegetarian substitute for लीन प्रोटीन एंड क्योंकि वेजिटेरियंस में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके प्रोटीन डिफिशिएंट होते हैं वो, तो वो अपना प्रोटीन का लेवल कैसे उसको सही रखे In एज अ fact, वेजिटेरियन? In fact, Shaina, you've asked me a great question. वेज हम एज लेमैन हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें प्रोटीन खाना कितना चाहिए। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक कटोरी दाल लेके कहते हैं आज हमने दिन का प्रोटीन खा लिया। तो जैसे अगर आपका आई वेट 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक कप दाल में ना खाली 6 ग्राम होता है। दाल, अगर आप न्यूट्रिशन में देखो, इज कंसिडर्ड अ कार्ब। इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पहली बात, अगर आप दाल खा के बोल रहे हो मैंने प्रोटीन खाया, ये गलत है। Instead of dal, what you should be having is legumes. They have a much higher protein content. टोफू बहुत अच्छा होता है। अगर आप खा सकते हो तो आप सोयाबीन खाओ। सोया इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नट्स एंड सीड्स, ये छोटी क्वांटिटी में भी हमें इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन दे देते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे, इट्स कॉल्ड अ कंप्लीट प्रोटीन। तो आपको इनफैक्ट ये सारी चीजें खानी चाहिए। सो एक्चुअली Because जब like आप बोलते हैं नट्स, आपने नट्स काफी बार सो सॉरी सो आपने नट्स काफी बार पॉइंट आउट किया, कि नट्स खाने चाहिए। सो यूजुअली हमने सुना है कि थिंग्स लाइक कैश्यू has a lot of fat. In fact, I don't know if I'm right or wrong. So which nuts should one focus on and which seeds? क्योंकि आजकल बहुत fancy seeds आ गए हैं और everyone is suggesting lot of fancy seeds, उनको खाने के तरीके अलग अलग हैं, but can you tell us basic, very very simple things, that which nuts, which seeds, how to eat those seeds? चाइना, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। बहुत लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल होता है काजू में। Cashews have zero cholesterol. There is no veg source of cholesterol firstly. तो अगर आपने 5-6 काजू दिन के खाने हैं, आप प्लीज खाओ उनको। दे आर वेरी वेरी हेल्दी। सेकेंडली, आमंड्स आर ग्रेट। आप व्हाट इज आपको सब इजी सबसे सोल्यूशन होगा कि आप ना अपनी मुट्ठी में जो भी आपको नट्स पसंद है, डिफरेंट नट्स मिला के एक मुट्ठी खा लो। उसमें पंपकिन सीड्स डाल लो, चिया सीड्स डाल लो, बादाम डाल लो, अखरोट डाल लो, cashews डाल लो, any nut, pista डाल लो, mix all these nuts and have one fistful. Okay, that's fair enough.
And when And you make say sure you yeah, don't overdo nuts also, because again they're very dense in calories. तो अगर आप already if you're having extra calories, then don't overdo it. One fistful, जितनी आपकी मुट्ठी है उतनी आपको जरूरत है. okay. And how about, like, since the lifestyle is sedentary, काफी देर बैठे रहना है कुर्सी के ऊपर, and still when you eat, even if you eat basic, you tend to put on weight. So how frequent should the meals be, and how gap कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, because there are a lot of theories around it. कोई कहता है 2-2 घंटे में खाओ, कोई कहता है 1-1 घंटे में खाओ, कोई कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करो और 14 घंटे नहीं खाओ. So what is for this kind of a lifestyle, what do you suggest? The first thing I would want to say is इंटरनेट से कोई डाइट उठा के मत करो, वो आप कर ही नहीं पाओगे. आप रैंडम खाओ, कभी आप ऐसा करोगे कि कीटो डाइट पे चले जाओगे, ठीक है. एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर आप वो डाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस डाइट में जो आपका एनर्जी का मेन सोर्स होता है कार्ब्स, वो तो मैंने जीरो कर दिया. अब बिना फ्यूल के आपका दिमाग कैसे चलेगा? ऊपर से कीटो फ्लू होता है मोस्ट ज़्यादा लोगों को, उससे आपको और नींद नहीं आती है, और फिटीग हो जाती है, तो वो भी नहीं चल सकता. व्हाट आई एक्चुअली रेकमेंड इज दैट जो भी आप ऑलरेडी खा रहे हो ना, अपने उसी खाने को साफ करो. सो डाइट ट्रेडिशनली इज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स डाइटस, which is a way of life. So a diet actually needs to fit into your lifestyle for it to work. If you read any study, it says कि कोई भी डाइट अच्छी नहीं है, कोई भी डाइट बुरी नहीं है. जो डाइट आपका वेट लॉस करवा देती है आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपको खाली वो ही फॉलो करनी चाहिए. तो अगर आप सुबह 3 बजे उठ रहे हो तो और 3 बजे खाना खा रहे हो, ठीक है, आप उसी खाने में ऑल्ट्रेशंस करो ना. अपना पैटर्न भी चेंज कर दोगे, खाना भी बदल दोगे, कहोगे मुझे वर्कआउट भी करना है, नहीं हो पाएगा. आप सब कुछ एक ही बार छोड़ दोगे और बोलोगे डाइट मेरी बस की ही नहीं है. सो ऑलवेज मेक श्योर इट यू क्लीन अप योर डाइट फर्स्ट. दैट इज व्हाट आई रेकमेंड. मेक सिंपल चेंजेस. मतलब 2 रोटी 3 रोटी खा रहे हो, उसको 2 कर दो. रोटी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ा ब्रांड डाल दो, ठीक है. शाम को एक बार इसबगोल ले लिया, उससे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल आपका चेक में आ जाता है. छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, सीधा कूदने की कोशिश मत करो. That's actually a very good advice, because yeah, usually this happens that everybody wants to make that resolution and do everything on day one, and then वो सिर्फ day two या day three तक चलता है, and then you get frustrated, and you get back to your regular routine, and which is not helping anyways. So Ghanisht, do you want to ask any more questions? And otherwise, we can also open the floor to a lot of our listeners. They can send in their request, and we can if there are any questions, Malvika will be happy to take them. Sure, Shaina. Let's open the floor for questions from the audience. So now, everyone, if you have a question that you want to ask, Malvika is a clinical nutritionist. She's here to answer all your questions today. So if you can just raise your hand, Shaina or I would make you a speaker, and then you can ask your questions. Deepak, you're already a speaker, so please unmute and please go ahead. Yeah, I know, just following the protocol. Thanks. Malvika, I have a question. I follow a basic diet, दो चपाती दही और चटनी morning में, धनिया पुदीना and based on season. Then nuts, badam and akhroot. But during the second half of the day, I get very tired around 1 and 2, no focus and sleepy most of the time. And I don't trade also in second half that for that reason. So any suggestion around diet for second half of the day after 1? ऑफ कोर्स आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, आपने कोई प्रोटीन कौन सा लिया है? आपने कोई प्रोटीन नहीं लिया है Nuts, ना. yeah. इट्स अ इतना एवरी मील शुड हैव अ प्रोटीन सोर्स, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. सो आपको नींद इसलिए आती है क्योंकि आपने हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है. तो जैसे कि अगर आपने हाई कार्बोहाइड्रेट खा लिया, इट विल मेक यू यॉन and it will reduce your efficiency. So always make sure if you every meal of yours has a protein. So supposing आपने lunch करा, उसमें आप पनीर डाल लो थोड़ा. Okay.
Add a little paneer, add mushrooms. They're also a veg source of protein. Are you a non-vegetarian or a vegetarian? I can have eggs. You can have eggs, तो आप eggs डालो, legumes डालो, चने डालो अपनी डाइट में, बेसन का चीला खा लो. Add more protein. The less protein and more carbs are making you feel sleepy. Okay. Thanks, Malkvika. So we have somebody with the title of leading nowhere as a speaker. So can you please unmute and ask your question? Shaina, I think he's facing some technical issues. I think we've gotten more requests. So let's move on. Yeah. So have you made anybody else a speaker? So I also suddenly thought of a question that I wanted to ask Malvika. If there's no one, then I can ask that question. Yeah, sure. So Malvika, what is your concept for, or whatever, what is your suggestion on caffeine intake, tea and coffee? Because tea and coffee के बिना नहीं चलता हिंदुस्तान में, हमारा बिल्कुल भी नहीं चल पाता. And then so उसको what is the minimum you can have, or what should you do around it, and what are the timings of the day that you should not have, or something. Okay, so two things. Coffee has great health benefits, we all know. It has antioxidants, which are very good. It boosts your energy level. It can lower the risk of diabetes. How it helps in brain functioning also. So, if you see, according to 13 studies, people who regularly consumed caffeine had a lower risk of Parkinson's disease. So, yes, I would say caffeine is very good. But having said that, extra coffee also has side effects, right? Which आपको एक्स्ट्रा कॉफी पीने से एंजाइटी हो सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं. कॉफी इज वेरी एडिक्टिव एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो कि कॉफी पियेंगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है. ये आपको इंसोम्निया कर सकती है. एंड अगर आपको ऑलरेडी हाई बीपी है, extra coffee will increase your BP. So please make sure that you do not have it in excess. As we say, too much of everything is bad. So caffeine also needs to be had in the right quantity. This is what I would want to say on caffeine. And how about tea? This nation thrives on tea. Again, so firstly, चाय कभी काढ़ के नहीं पीनी है. अगर आप चाय पी रहे हैं तो जैसे ब्रिटिशर्स पीते थे ना, डिप डिप करके, वैसे पीजिए. काढ़ने से इट इज पॉइजन फॉर यू. अपनी चाय कभी काढ़ के नहीं पिए, ठीक है. सेकेंडली, अगेन, टी ऑल्सो has antioxidants. It also has caffeine. So please have it in moderation. I would recommend about 2 cups of tea a day. एंड इफ यू स्टिल फील दैट आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं टी और कॉफी के बिना, आप 4 कॉफी पी रहे हैं, तो आप ऐसा करो, पहले उसको 3 कॉफी कर दो और एक ग्रीन टी इंट्रोड्यूस कर दो. सो टेपर इट डाउन. That's what I would recommend. Okay. So we have a lot of speakers now, Yes, and a lot of requests. Pawan Please. is there. Pawan, please ask your question. Pawan, are you there? Yeah. I am audible. Yes, Yeah. now you're audible. Please ask your question. I want to ask about the psychology or emotions. How we control our emotions or psychology during our trading for better health. That I want to know. See, what happens is आपके emotion, see, a diet has an extremely huge impact on your emotion. In fact, जो 43% adult होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, उनको ओबेसिटी भी होती है, ठीक है. और अगर आपको एंजाइटी हो रही है, पहले आप देखिए कि आपके हाइड्रेशन लेवल्स ठीक है कि नहीं. इवन हाइड्रेशन कॉजेज इमोशनल अनस्टेबिलिटी. तो आप काफी पानी पी रहे हो,
अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, आपको इमोशनल वो हो सकते हैं डिसऑर्डर्स। सेकेंडली, ट्रेडिंग के बीच में ना अपना वही नट्स खाने शुरू करो। बीच में अगर बैठे हो, एक छोटा सा पैकेट बना लो जिसमें आपका फ्रूट है, थोड़ा सा फ्रूट खाओ। अपनी ब्रेन को अच्छा खाना देते रहो सो दैट यू बिकम इमोशनली स्टेबल वाइल ट्रेडिंग। चीनी बिल्कुल मत खाना, चीनी विल Malvika, फर्दर डैमेज your are brain। there any supplements that I can take जिससे मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर जो मेरे को फ्रीड और फियर होता है और ग्रीड होती है ये थोड़ा बैलेंस हो जाए? आर देयर एनी सप्लीमेंट्स दैट यू वुड रेकमेंड? सी अगर आपको गणेश, आई वांट ग्रीड हटाने के लिए तुम्हें दवाई खानी है? अगर शुगर मालविका क्रेविंग्स हो बताएगी रही ना? है, होती है। अगर आपको शुगर होती है क्रेविंग्स शायना, हो रही होती है, सुनो। अगर आपको शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप जिमनीमा की टैबलेट्स खा सकते हो। जिमनीमा टैबलेट्स हेल्प डू नॉट आपकी शुगर क्रेविंग्स बंद करवा देती हैं। और अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है, देयर इज अ सप्लीमेंट कॉल्ड 5-HTP जो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बनाता है। सो इट्स अ नेचुरल सेरोटोनिन सप्लीमेंट, यू कैन हैव दैट। सो 5-HTP and जिमनीमा फॉर शुगर क्रेविंग्स। थैंक यू पवन जी, we'll be removing you now. Vivek ji, please ask your question. रॉनी, लिटिल कंफ्यूज्ड, ये स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में है या हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में है? जस्ट गॉट लिटिल कंफ्यूज्ड। एनीवे, माय क्वेश्चन बेसिकली वाज, सर, I'll tell you बेसिकली क्या है सर कि एज स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हम लोग बड़े अनहेल्दी लोग हैं। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा अनहेल्दी हूँ, इसलिए वी कॉल्ड मालविका ताकि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। right. Hey Malvika, this is Vivek. So my questions are around dal, a legume. The general wisdom is that dal is full of proteins, but some of the nutritionists, when they offer a diet for weight loss, they just take off the dal from your menu, especially in the second half of the day, after sunset. So what is your take on dal and legumes if somebody is following a weight loss regime? That's exactly when I was answering. I don't know if you were there when I was answering Shaina's question. The first thing I said was dal is not a protein, it's a carb. That is why dietitians try to reduce your intake of dal, especially रात को इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप दाल और रोटी खा लो ना तो आप दो कार्ब्स मिक्स कर रहे हो। जैसे ही दो कार्ब्स मिक्स होते हैं ना, बॉडी में वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है और आपका अगले दिन स्केल पे वेट ज्यादा आता है। इसलिए डाइटिशियंस रात को दाल कम करती हैं, और अगर देंगी तो आपको दाल सब्जी के साथ देंगी, दो कार्ब्स कभी मिक्स नहीं करेंगी। This is the So concept behind it. One cup of dal just has 6 grams protein, na? That's nothing. That's literally अगर आप so if somebody is तो wanting, मतलब if somebody is, sorry, if somebody is wanting to lose couple can you hear me? kgs, he should take dal off his menu at all, totally? I would not For take dal off. No, I would not take dal off his menu. I would customize it in a way that I give dal individually with another protein source, or I would give dal with a vegetable. So that's what I would ideally do. Okay, dal with vegetables. Yeah, dal would be better with vegetables. So I would maybe change the form and give you a moong dal ka chila with a cup of curd. Or if I want to give you dal, I can give you maybe a moong dal ka chila with a cup of sabzi. And I will make sure I add green chutney because that is so rich in vitamin C. And vitamin C is very important for stock traders because जो भी आपका brain में extra stress लेने से vitamin C, it's an antioxidant. As I was speaking about nutrients, तो मूंग दाल चीला खा लो दही के साथ, सब्जी के साथ या फिर चटनी के साथ. That's how you consume it. Change the form. दाल की इडली बना लो, दाल का ढोकला बना लो. Change the form of dal. Thank you so much, Malvika. But vitamin C is the second most important thing for traders. The first important thing is vitamin M. Vitamin what? Which vitamin? M. Vivek, I think it's vitamin B, bull market. No. No, you need money to trade, right? You can trade both in bear market also. Thank you, Malvika. You've been great. Thanks, Vivek. Bye. Arun, you can speak now. Please unmute yourself and kindly ask your question. Yeah, thank you. I would just like to introduce myself. I've been a trader for over 26 years now. And unfortunately, since I heard a lot about diet, I would like to say that I'm terminally ill.
I've got CLD, I've got pancreatitis, pulmonary embolism, esophageal varices, and allopathy isn't working. So it has to be dietary. There's heavy fluid retention Yes. in my body. And if you do this procedure called tapping, I got to keep going every couple of days for getting fluids extracted. So how do I do have a lot of proteins, egg whites, um, and fruits, and that's all I can take. So Okay. any advice? So for so since your case is a little complex, I would actually need a lot of blood work and all before I answer this question. Since it's a very particular medical condition, I would not want to answer it without any blood reports. Okay, cool. Because there's a lot of I thing think there are a lot of things Arunji, you that need to be can correlated. connect with her on Mhm. a If direct you message can connect later with on, me, and Is your DM open? yes, yes, it's open. It's open. Okay. yeah, you can DM me. So I would need a lot more information for your diet. Cool. I can send you screenshots of my reports, Oh, and yeah, that's that it. would be better. That's about it. Yeah, Thank you for giving me the chance to speak. yeah, sure. Thank you so much, Arun, and feel Thanks, Arun. better, please. Yep. Bye. Rohit, you can ask your question, please. Yeah, hi Malvika. How are you? This is Rohit. Actually, my wife Pooja, she has a question for you. Hi, ma'am. How are you? I would, I'm good. I would like to ask you what kind of diet do we need to control hair fall and for dandruff? See, so for hair fall, what you need, two nutrients are very important. One is zinc and one is biotin. तो आप zinc और biotin right amount में खाओ. Thirdly, enough protein. तो हमारा जो बाल होता है वो keratin का बनता है, which is a protein. So lack of protein in your diet will always cause hair fall. So these are the three things that you need to incorporate: zinc, biotin, and protein. Okay, thank you so much. Zinc के लिए if you want sources, you can make sure you eat eggs. अगर आप vegetarian हो, dairy is a good source, and legumes. So, Raj, you can please ask your question. Yes, thank you. Yeah, thank you for giving the chance for me. Could you please suggest a diet which helps to people who have acidity or constipation? Okay. So firstly, are you also if you're a trader, high stress is could be damaging your gut health. तो सबसे पहले मेक श्योर दैट यू आर नॉट सब एसिडिटी इज कॉज जो ट्रिगर्स होते हैं आप राजमा से होएगी छोले से होएगी चने से होएगी इफ यू आर हैविंग टू मच कैफीन please stop having too much caffeine and go on a diet which will clear out your stomach. So it's actually called an elimination diet, which I would recommend for constipation and acidity. And constipation के लिए if you want, you can also start having Softovac, Isabgol या फिर a magnesium supplement. Okay. Uh, is there any way we can include more fiber in our daily diet? Like which kind But of fiber we can add? see, the best way to add fiber in your diet is that आप अपनी रोटी के अंदर ही ना ब्रांड मिलाना शुरू कर दो. So that is one very simple way to add fiber. Second thing, what you could be doing wrong is that अगर आप खाली फाइबर खा रहे हो और पानी नहीं पी रहे हो ना तो आपकी कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाएगी. बिकॉज जैसे कि आप देखो, अगर आपने ईसबगोल लिया राइट, उसके अंदर मैं पानी डालती हूँ तो ईसबगोल सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है ना. अब आपकी बॉडी के अंदर भी वो एग्जैक्टली यही कर रहा है. आपने फाइबर खाया, जो आपके पेट के अंदर फाइबर था उसने अब्जॉर्ब कर लिया. अब आप एक्स्ट्रा पानी पियोगे तब भी वो बाहर निकलेगा. सो आई यू मेक श्योर यू हैविंग इनफ वाटर विद फाइबर, अदरवाइज योर कॉन्स्टिपेशन विल वर्सन. लाइक सम पीपल से ना इसबगोल हमें सूट नहीं करता, वो इसलिए सूट नहीं करता. एक चम्मच इसबगोल के साथ कम से कम 3 ग्लास पानी पीना चाहिए आधे घंटे के अंदर, वरना कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है. Thanks, Malvika. I just want to remind everyone that the spaces will end sharp at 10.
So उससे पहले अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चंस पूछने तो right now is the best time to do it. Parvez is now a speaker, I think. Yeah. I've also added Rohit, so yeah. Parvez, you can ask your question. Hi, Ghanisht, Shaina, and lovely hearing you, Malkvika. Just had a question about 5-HTP that you mentioned. I just looked it up on the net, and it's very interesting. Can you shed some more light about it? What is your recommendation? What is the dose and the uh, what mg do you recommend that we take? So I actually would not want to recommend it without knowing anything about your body. I cannot just recommend a supplement randomly because if you're already on any other medication, supplements can interfere. But in general, 5H, I can tell you what 5-HTP is. It is actually a mix of amino acids which will create serotonin in your body and help you get out of depression, insomnia, and it will reduce anxiety. The dosage and all is very particular to a person. It's a very specific thing which I wouldn't want to answer without knowing your body and your blood work So Malvika, and the Parvez medicine ji you're can on. DM you? Yeah, he can definitely DM me. I'll do that. I got a follow-up question also, Malvika. I'm not an active trader. I'm an investor, but I spend a lot of time researching and doing it, etc. But at the same time, I was on an intermittent fasting, and that worked very well until it got to a plateau. And then once I broke off from the intermittent, I nibble on a lot of snacks in between, and that kind of has put on the weight again. So what do you recommend the way forward? See, there one thing I would want to say, intermittent is a very, very healthy diet to follow. Again, intermittent must have not fit into your life, right? That's what I said. A diet needs to be according to your lifestyle. Then you let that habit be. Have small meals. Then what is a better approach for you would be eating a small meal every 2 hours, every hours, or at a particular time, make that a heavy meal and uske baad make a meal light. So there is no one way to lose weight. So I think change your diet pattern and find a pattern that fits your lifestyle. Okay, great. Thanks. Thank you, Parvez ji. Thanks. Shaina, I have a lot of people who've requested, so I'll start adding them. Yeah, Gaurav This is now a is speaker. piling up. This is piling up. Gaurav ji, can you keep your questions short, please? Because we श्योर tons of नहीं, requests. क्वेश्चन नहीं है मेरा मैम एक्चुअली आपका डीएम चालू नहीं है, तो आपको कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे हम? डीएम चालू कर दो जी मालविका जी, नहीं तो आप एफएम के डीएम पे भेज सकते हैं गौरव जी, एंड वील पास ऑन टू मालविका, बट मालविका's डीएम विल बी ऑन आफ्टर दिस space is Okay, thank you. That's it. If anyone can't contact Malvika, they can just DM us and we'll relay it. Anup, you are the speaker. Please go ahead, ask your question. Yeah, thanks for giving me opportunity. Malvika madam, I have some higher level of cholesterol, as we were discussing for cholesterol. I have LDL cholesterol of 206 and LDL to HDL ratio is 3.81. And I am not a full-time trader, but yes, part-time trader from the work from home has started. So it's kind of full-time now. So any diet for me for higher cholesterol? पहली चीज बोलूंगी, as I said, please lose weight. 10% weight loss is needed. But ma'am, Secondly, make small changes. but whoever is meeting me after 2-3 months, he's asking me that I have lose weight already. I mean, I'm looking very thin. I got my blood checkups also. Sugar is also normal, and Anup, I think this needs some detailed follow-up. So if you can DM Malvika, that would be great. Okay, thank you. Yeah, thanks.
Uh, Dasti, please ask your question. Yes, thank you. Hi, Malvika. I just wanted to ask you about traders who are suffering with hypertension or blood pressure. What would be your recommendation for them? So that is a very good question. Actually, the diet is called a DASH diet, which is a dietary approach to stop hypertension. तो उसमें क्या होता है, the things which are high in potassium, magnesium and calcium वो दिया जाता है, सोडियम, शुगर एंड ट्रांस फैट आपकी डाइट से निकाल दिया जाता है. So a DASH diet is the therapeutic diet for blood pressure. Sodium, as in, if we remove sodium, that's like we are removing salt from the diet. No, of course not. Please, in fact, never remove salt from your diet. You can Acha. always switch to Tata Light. It has lesser sodium. Okay. And ऐसा कभी मत करना कि नमक खाना बंद कर दो और सीधा नमक खा लो, because नमक में हम आपको, as we all know, हमारा नमक is fortified, right? Yeah. So if you have सीधा नमक, it can be, and you have thyroid, it will worsen the condition. Okay. सीधे नमक में आयोडीन नहीं मिलेगा ना आपको, and that is very important for thyroid functioning. तो फिर switch to Tata Light. Okay. नमक नहीं बंद करना. Okay. So it's called DASH diet, right? Yeah, it's called a DASH diet. Okay. All right. If I need any more information, I'll DM you. Thank you. Yeah. Hi, Malvika. Hi. Yeah, my question is regarding sources of B vitamins, especially B12 for vegetarians. If you can throw some light on that, because that's a very important vitamin for body functioning. See, the different types of B vitamin, a very good source would be legumes, whole grains, cereals. Whole grain cereals and legumes are a very good source. Secondly, जो B12 होता है ना, that is mostly manufactured in our gut. तो अगर आपकी gut health ठीक है तो आपका B12 ठीक रहेगा. Vegetarians के लिए डाइट में इतने सोर्सेज नहीं है B12 के. So for a vegetarian, make sure you take care of your gut health if you want vitamin B12. And other vitamins, again, whole grain cereals and legumes are very good. And could you please throw some light on improving the gut health? What food sources we should consume, or any dietary changes? So, any cheese, if you want great gut health, you need to stop eating sugar. And probiotics are very important. तो probiotics हमारे को ये नहीं करना कि kombucha पीनी है, कैफीर पी. It doesn't have to be that fancy. जो हमारे simple इडली है, that is a probiotic. जो हमारा दही है, that is a probiotic. जो हमारा ढोकला है, that is a probiotic. ऐसी चीजें और खाएं so that you have good bacteria in your gut. So incorporate all this. Karuneshi, please ask your question. Thank you, host and co-host, for giving me an opportunity to ask a question. My height is 5'8" and my weight is 95 kg. How can I lose? I am not jogging. I am brisk, walking around 3 kilometers every day. That's it. Again, as I said, I will have to, understand your lifestyle, your likes, your dislikes, and then I will be able to, formulate a diet plan for you, because there is no one diet plan जो सबको पतला कर देता है. In diet, one diet fits all does not work. So again, it will be a very personalized thing. Okay, so maybe I will DM you my details. You can DM me, and I will need details before giving a diet plan. Okay, thanks. Thank you. You're welcome. Thank you, everyone. 10 बज गए हैं. We've got a lot of requests. So Malvika, we've got a lot of requests, but time खत्म होने वाला है. So how can everyone contact you? What I can do is, if anyone has a query, they can drop it on my number, health decoded. It's 99583 68410, and my team will get in touch. Can you repeat it again, please? 99583 68410. And we can DM you on Twitter as well, right? You can DM me on Twitter as well. If you want, you can also DM me on Instagram. Health Decoded.
Okay. Thank you. Shaina, let's close. I guess it's already 10, so I think we should bring it to a close. Thank you so much, Malvika, for all your inputs today. I'm sure a lot of people benefited, and a I'm lot sorry of. everyone जिसकी request हम लोग ले नहीं पाए. Please, you guys can really send her a direct message, and I'm sure Malvika will respond with all your queries. Malvika, please answer their questions. Sure. And thank you so much for giving your time, everyone who has joined us. And thank you, Malvika, for helping us with a very pertinent topic today. Thank you so much, everyone. Good night. Thank you, Ganesh. Good night. Thank you. Thank you, Bye. Shaina. Good night. Good night, Malvika. Good night. Bye.